हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल अभ्यास अड्डा। हम अपने पॉलिटी के लेक्चर से शुरुआत करते हैं। हम अपना पॉलिटी पढ़ रहे थे। हमारा फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट हो गया था। हम अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पे आए हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहले जानते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। तो ये हमारे पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक। Question number first. The purpose of the inclusion of directive principles of state policy in the Indian Constitution is to establish A. Political democracy, B. Social democracy, C. Gandhian democracy या D. Social and economic democracy। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, सोचिए। जी हाँ, इसका आंसर होगा D। The purpose of directive principles of state policy is to establish social and economic democracy. This will help India grow as a welfare state. Question number second. The directive principle of state policy may be classified into which of the following parts for the sake of convenient study? A. Social, B. Liberal and intellectualist, B. Liberal and intellectualist, C. Gandhian या D. All of the above। तो कितने में क्लासिफाइड है? ये ऑल ऑफ द अबव होगा। आंसर नंबर all of the above. The constitution does not contain any classification of directive principles. However, on the basis of its content and direction, they can be classified into three broad categories, that is with socialist, Gandhian and liberal intellectual. Question number 3. Which one of the following is not the objective of the directive principle of state policy? To establish a welfare state, to ensure social economic justice, to establish a religious state या D to establish a secular state। तो कौन सा नहीं है? तो जाहिर सी बात है C नहीं होगा और बाकी सब सही है। तो आर्टिकल 36 to 51 of the Constitution of India contain the directive principle of state policy. The aim of the constitution makers was to establish a secular democratic state to ensure social economic justice. Question number 4. Which of the following is not the objective of the directive principles of state policy? Question is repeated. To establish a welfare state, to ensure social economic welfare, to promote international peace and security, to establish a religious state। तो कौन सा नहीं होगा? आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी। Question number 5. Consider the following statements regarding the directive principles of state policy. A. These principles spell out the social economic democracy in the country. B. 2. The provisions contained in these principles are not enforceable by any court। कौन सा इसमें से सही है? तो these principles spell out the social economic democracy in the country, सही बात है, social economic democracy, और ये नॉन इन्फोर्सिएबल है। तो बोथ 1 and 2। ये देखिए, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर डायरेक्टिव्स टू द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट देम फॉर एस्टेब्लिशिंग social and economic democracy in the country. The provisions contained in these principles are not enforceable by any court. These principles have been stated as fundamental in the governance of the country. Question number 6. With reference to the provision contained in Part 4 of the Constitution of India, which of the following statement are correct? They shall be enforceable by courts. They shall not be enforceable by any court. The principles laid down in this part are to be influenced the making of law by the state। तो इसका ऑप्शन 1 होगा, 2, 1, 3 या 2, 3। तो इसका होगा, देखिए ये नॉन इन्फोर्सिएबल है, तो ये फर्स्ट वाला तो गलत हो जाएगा, तो 2 and 3 सही है। ये देखिए, Article 37 of the Indian Constitution says that the provision contained in Part 4 of the Constitution shall not be enforceable by any court, but the principles therein laid down and are nevertheless fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. So the directive principles are non-justiciable and non-enforceable by the court, but this is also important for our welfare and making laws and rules for the nation. So question number 7 is the concept of included in the Constitution of India in the directive principle of state policy, या B fourth schedule of the Constitution, C fundamental rights या D preamble of the Constitution। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर A। The concept of the welfare state is included in the Constitution of India in Part 4, that is directive principle of state policy described in Article 36 to 51। Question number 8. Which part of Constitution of India describe the model of welfare state? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रीएम्बल या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। तो इसका आंसर क्या होगा? डी।
Question number 9. Which part of the Constitution of India declares the ideal of welfare state? Again, directive principle of state policy. The idea of India as welfare state is found in preamble of the Constitution, fundamental duties, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बोथ ए एंड सी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बोथ ए एंड सी। प्रियम्बल भी है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी है। द आइडिया ऑफ इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट इज फाउंड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन as well as the directive principle of state policy. The preamble gives importance to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic. In the same way, the directive principle guide both center and the state for the establishment of a welfare state. Question number 11. Consider the following statement. With reference to the Constitution of India, the directive principle of state policy constitute limitations upon legislative function, executive function. तो क्या होगा इसका? तो ये किसी पे हमने बताया ना नॉन इन्फोर्सिएबल है, तो ये किसी पे नहीं अपना लिमिटेशन कर सकता है, तो नाइदर 1 and 2. The directive principles of state policy are certain direction to the legislative and the executive intended to show in what matter the state should exercise their legislative and executive power. The directive principles are in nature of instrument of instruction in the government to the government to do certain things and achieve certain ends by their actions. The directives are non-enforceable in the court and do not create any justiciable right in favor of the individual. Thus, the directive principles of state policy do not constitute limitation upon legislative or executive function of the government. Question number 12. The directive principles of state policy of the Constitution of India is taken from the Constitution of which country? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है कि अमेरिका से, फ्रांस से या आयरलैंड से? तो ये हमारा जाहिर सी बात है आयरलैंड से। The Indian Constitution borrowed the directive principle of the state policy from the Constitution of which of the following countries? तो ऊपर बताया मैंने आयरलैंड से। The Indian Constitution, the idea of directive principle of state policy has been taken from the again, that is Ireland. Directive principle of state policy are non-justiciable. According to the Constitution of India, which of the following are fundamental to the governance of the country? A. Fundamental right. B. Fundamental duties. C. Directive principle of state policy. या डी फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज? तो जाहिर सी बात है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, सी। ये देखिए क्या पूछा था क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री? Article 37 of the Constitution says that the directive principles are not enforceable in any courts of law in India but are fundamental in the governance of the country. It will be the duty of the state to ensure that these principles are applied in the legislation of laws. So question number 17. Under the Indian Constitution, concentration of wealth violates the right to equality, the directive principle of state policy, the freedom of the right to freedom, the concept of welfare. तो दोस्तों इसका आंसर होगा द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्योंकि ये वेलफेयर स्टेट को डिफाइन करता है। तो आर्टिकल 39 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट सर्टेन प्रोविजन ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट शैल इन पार्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सेक्योरिंग that the citizens, men and women, equally have the right to an adequate means of livelihood, that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good. तो ये कंसंट्रेटेड वेल्थ को, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को वायलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 18. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हैज बीन इंश्योर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वन ऑफ द, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में आता है। ये देखिए आर्टिकल 39 डी के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है, तो जाहिर सी बात यही होगा आंसर नंबर बी। Which one of the following is included in the directive principles of state policy? Protection in respect of conviction for offences, protection of life and personal liberty, protection of interest of minorities, या equal pay for equal work for both men and women, article 39B. तो यही होगा आंसर नंबर डी। पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, या डी इलेक्शन कमीशन एक्ट? तो इसका आंसर किसके अंदर आता है? ये पंचायती राज सिस्टम, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 22. मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन। तो एबॉलिशन ऑफ टाइटल किसमें है? फंडामेंटल राइट्स के अंदर है।
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये है हमारा डीपीएसपी में पहले में। और टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू द चाइल्ड वार्ड बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, ये किसके अंदर आता है, हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आता है। इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट, ये क्या है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो कौन सा आंसर होगा, आंसर नंबर बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, ये विलेज पंचायत किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 40 में है, आंसर नंबर बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट्स टू ऑर्गेनाइज द पंचायत, बताया मैंने ऊपर आर्टिकल 40। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इसको मैच करना है। आर्टिकल 40 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, 41 है राइट टू वर्क, 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, सही है, और 48 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ए का फर्स्ट, बी का 2, सी का 3 एंड ये तो सीधा सीधा है, तो इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा ए। Question number 27. Which one of the following is not correctly matched? The separation of judiciary from executive, ये आर्टिकल 50 में है। The promotion of educational and economic interest of scheduled caste and scheduled tribe, article 46. The promotion of cooperative societies, article 43A. The organization of village panchayat and enable them to function as the units of self government, तो आर्टिकल 40 में है। तो कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर सी, द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज किसमें है, 43B में है, ना कि ए में। Which one of the following is not correctly matched? Article 39A equal justice and free legal aid, ये सही है। ये 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड सही है। आर्टिकल 48 नहीं, ये गलत है, ये 50 में है, तो डी वाला। Question number 29. Given below are two statements, one labeled as assertion and other is reason. MG Narega is providing employment to at least one member of the eligible household for a minimum period of 100 days in a year. Reason, right to employment is enumerated in part 3 of the Constitution. तो ऐसा हमारे कहीं भी नहीं है कि right to employment है, तो ये कौन सा होगा हमारा, A is true and R is false. Question number 30. Which one of the following articles of the Directive Principle of State Policy deals with the promotion of internal peace and security? तो कौन सा होगा, आर्टिकल 51, 48A, 43A, 43A या 41, तो कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 51A। In the Constitution of India, promotion of international peace and security is included in the Directive Principle of State Policy. Question number 32. Which part of the Indian Constitution refers to the responsibility of the state towards international peace and security? फंडामेंटल राइट्स नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज भी नहीं है, तो ये हमारे डीपीएसपी के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 33. Which article of the Indian Constitution is related to Indian foreign policy? तो ये इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी का आर्टिकल 51। In India, separation of judiciary from the executive is enjoyed by the preamble of the constitution, नहीं है। Directive principle of state policy, 7 schedule, conventional practice, ये हमारा होगा बी वाला। Question number 35. Which article of the Constitution of India has the provision of participation of workers in management of industry? क्या होगा, आर्टिकल 43, 43A या 45 या 47, तो इसका आंसर होगा बी वाला, 43A के अंदर। Which principle among the following was added to the Directive Principle of State Policy by the 42nd Amendment to the Constitution? Equal pay for equal work for both men and women, participation of workers in the management of industries, right to work, education and public assistance, securing living wage and human conditions of work to workers, तो इसका आंसर होगा बी। Which of the following was not added to the Directive Principle by the 42nd Amendment of the Constitution? Protection of children and youth from exploitation, equal justice and free legal aid,
यूनिफॉर्म सिविल कोड, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, इसका आंसर होगा सी, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट में। क्वेश्चन नंबर 38, द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन टू ए चिल्ड्रन, टू वुमेन, 3 ट्राइबल्स या 4 दलित्स, इसका आंसर होगा सी, 1, 2 and 3. Question number 39. Which one of the following is not a directive principle of state policy? A. Prohibition of the consumption of intoxicating drinks. B. Cow protection. C. Environment protection. D. Free education to children to the age of 14. तो इसका आंसर क्या होगा? D. In the Constitution, prohibition of the consumption of intoxicating drinks and cow protection is described under Article 47 and 48 respectively. Under Article 48A, protection and improvement of the environment is provided. Provision of free and compulsory education for all children until they complete the age of 14 years are mentioned in the Article 45 of DPSP. But in 2002 86 amendment, the above provision became the fundamental right under Article 21A. Question number 14. Which of the following the provision for the protection and improvement of environment and safeguarding of forest and wildlife are found in the Constitution of India? Only in the directive principle of state policy, only in the fundamental right, या दोनों में या किसी में नहीं? तो इसका आंसर होगा दोनों में है। क्वेश्चन नंबर 41. Which one of the following is not a directive principle of state policy? A. Prohibition of the consumption of intoxicating drink, prohibiting the slaughter of cows and calves, protection and improvement of the environment, या D. तो मैंने ऊपर बताया कि ये फंडामेंटल राइट में जोड़ दिया गया था ऑप्शन, फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 16, तो डी वाला नहीं होगा। Question number 42. How are the directive principle of state policy different from fundamental rights? A. Former is for union government and latter is for state government. Former is a part of constitution whereas latter is not. Directive principles are not enforceable whereas fundamental right can be enforced. So option C is right. Question number 43. Which of the following are included in the directive principle of state policy? A. Prohibition of trafficking in human beings and forced labor. Prohibition of consumption except for medicinal purpose for intoxicating drinks and of other drugs which are injurious to health. तो ये है prohibition of trafficking, ये तो fundamental right का में है, तो इसका होगा only 2, B वाला. The directive principles are non-justiciable. Question number 45. Consider the following provision under the directive principle of state policy as enshrined in the Constitution of India. A. Securing uniform civil code for citizens of India. B. Organizing village panchayat. C. Promoting cotton industries in rural areas. D. या 4. Securing for all the workers reasonable leisure and culture opportunities. Which of the following above are the Gandhian principles that are reflected in the directive principle of state policy? तो Gandhian principle पे कौन सा बेस था? ए फर्स्ट वाला नहीं होगा, ये गांधी विलेज पंचायत को सपोर्ट करते थे गांधी जी. प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज, हाँ ये सही है, तो ओनली 2 and 3, बी वाला. क्वेश्चन नंबर 46. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट. द स्टेट शैल नॉट डिनाई equality to any person before the law. The state shall not discriminate against any person on the ground of religion, race, caste, sex or place of birth. Untouchability enforcement. तो कौन सा है? तो ये ए वाला होगा, बाकी सब फंडामेंटल राइट्स का है. क्वेश्चन नंबर 47. द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अबाउट adult education, living wages for workers, free legal aid to the poor, primary education to children they complete the age of 6 years. तो इसका आंसर होगा adult education. The provision for adult education is not mentioned in the directive principle of state policy. Living wages for workers is mentioned in Article 43. Free legal aid 39A में है, and the age of 6 and the for early childhood care and education to children below the age of 6 is under Article 45. 48 question. Which of the following directive principle of state policy was added to the constitution at a later date? A. Organization of village panchayat. B. Prohibition of cow slaughter. C. Free legal aid या D. यूनिफॉर्म सिविल कोड. तो इसका आंसर होगा C. 39A बाद में जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट में 1976. 49 question. Which of the following is not included in the directive principle of state policy? Prohibition of liquor, right to work,
इक्वल वेज फॉर इक्वल प्रोटेक्शन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो कौन सा नहीं, डी वाला। क्वेश्चन नंबर 50, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी? यूनिफॉर्म सिविल कोड, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, फ्रीडम ऑफ द रिलीजन, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो ये तो तीनों फंडामेंटल राइट है, तो ये डीपीएसपी में ए वाला आंसर इज ए। Question number 51. Which of the following is are listed among the directive principles in Part 4 of the Constitution of India? A. Equal pay for equal work. 2. Uniform civil code. या 3. Small family norm. 4. Education through mother tongue at primary level. इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली, बी वाला। Question number 52. Identify the correct pair mentioning the directive principle of state policy in the Constitution of India. इक्वल जस्टिस में फ्री लीगल एड, आर्टिकल 42। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, 43, ये सही है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये गलत है क्योंकि आर्टिकल 40 में है। दैट देयर इज इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, आर्टिकल 39 डी में है, तो इसका डी वाला। Question number 53. Identify the items included in the directive principle of state policy. First, prohibition of consumption of liquor, prohibition of employment of children in factories or mines, prohibition of beggar or forced labor, prohibition of untouchability. तो इसका only first होगा, सी वाला, और बाकी fundamental rights का है। Question number 54. Which one of the following is not a directive principle of state policy? A. Equal pay for equal work for both men and women, equal right to an adequate means of livelihood, abolition of untouchability, just and human condition of work. सी वाला फंडामेंटल राइट का है, पार्ट है। Question number 55. The directive principle of state policy is a check which is paid on bank convenience. Who said it? तो किसने कहा था ये? केटी शाह ने कहा था। With question number 56, with reference to the Constitution of India, consider the following: fundamental rights, fundamental duties, C. Directive principle of state policy. Which of the above provision of the Constitution of India fulfill the National Social Assistance Program launched by the Government of India? इसका होगा only 3, Directive principle of state policy, B वाला। Question number 57. Which of the following is empowered to make law for economic and social planning beside the infants and minors in India? Only the central government, only the state government, both the central and the state government, only the local government. तो इसका आंसर सी होगा, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों बना सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा खत्म होता है डीपीएसपी। थैंक यू।